Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं आज से उसके ऊपर बात करेंगे। वी नो दैट पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज़ टेकिंग प्लेस, और उसके हवाले से हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जो हैं वो बनाई हैं पिछले कुछ दिनों में, और हमने उसके अंदर एनालिसिस किया है इस वॉर के हवाले से। बट आज के इस एपिसोड में उसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो दोहा के अंदर पीस टॉक्स शुरू हुई आज से विद द मीडिएशन ऑफ कतर, उसके हवाले से जो है वो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर पाकिस्तान्स इंटरेस्ट, व्हाट पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग टू कम्युनिकेट टू अफगानिस्तान एंड द मीडिएटर इन दोज टॉक्स। और दूसरा हम बात करेंगे व्हाट आर अफगान्स एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज टॉक्स। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होगा नाज़रीन, वो पाकिस्तान के लिए लेसन होगा that based on the past behavior of Afghan Taliban, based on their ideological and strategic interest in the region, उस हवाले से पाकिस्तान के पास क्या lessons हैं, what can we expect from them, and whether they would be following the commitments made in those talks. तो lessons क्या हैं that we must keep in mind while negotiating with Afghan Taliban in Doha. तो इन तमाम मामला के ऊपर हम आज की एपिसोड में बात करेंगे। बट बिफोर आई गो ऑन टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दोज डेवलपमेंट्स, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा वी आर स्टार्टिंग नॉट जस्ट अ क्रैश कोर्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी अनाउंस किया था, फॉर करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द KPPMS स्टूडेंट्स एज वेल एज द CSS 2026 एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट इंटरव्यूज, चाहे वो सिंध का इंटरव्यू हो, CCE का, या फिर जो है वो CSS 2025 के जो aspirants हैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस हो। दिस क्रैश कोर्स वुड बी एक्सट्रीमली वाइटल एंड इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ देम। Besides that, we are starting the last full-fledged course for the current affairs for those who are appearing in CSS 2026, a comprehensive course covering all major parts of current and Pakistan affairs. The course is likely to start in the last week of October and end by the end of December. और वो जो कोर्स होगा, ये कोर्स comprehensively 200 marks को cover करेगा, and this will be the last batch for 2026. But obviously this course will also be helpful to those who are preparing for the CSS 2027. So get yourself registered for these courses on the given number. अब हम आते हैं नाज़रीन इसके ऊपर जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो कतर में दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं आज से, उसका अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो नाज़रीन ये जो नेगोशिएशंस हैं दे आर दी फॉलो अप ऑफ दी ओवरऑल पाकिस्तान अफगानिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में हो रही है, जिसको हमने वीडियोज में बात की थी। जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की जो रिस्पांस था टू दी इंटेंसिफाइड टेररिस्ट अटैक्स ऑन पाकिस्तान, उसके रिस्पांस में जो पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर, पहला राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड हुआ, और उसके बाद जो है वो सीज फायर हुआ फॉर 48 आवर्स, और वो सीज फायर जो है वो कल ख़त्म हुआ, और कल हमने उस पर बात भी की थी। एंड एज एक्सपेक्टेड दैट सीज फायर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू द नेगोशिएशंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन दोहा, जो आज से शुरू होनी है। तो नाज़रीन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ऑब्वियसली बात है, ये जो टॉक्स हैं ये एक्सपेक्टेड था कि कोई मीडिएटरी कंट्रीज और पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक कतर, दे वुड बी प्लेइंग अ रोल इन कूलिंग डाउन दीज टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ स्टेट्स। और उस हवाले से ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इसमें अफगानिस्तान का जो डेलीगेशन है इट विल बी लेड बाय दी मुल्ला याकूब हु इज़ दी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, और पाकिस्तान से डेलीगेशन भी जा रहा है जिसके नाम अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पब्लिकली नोन नहीं है, बट वी एक्सपेक्ट दैट सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप इज लाइकली टू बी पार्ट ऑफ इट। अब नाज़रीन ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, ये मुज़ाकरात के ऊपर उससे पहले अगर मैं बात करूं तो डिस्पाइट द एक्सटेंडेड सीज फायर, डिस्पाइट द नोन पॉइंट दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर नेगोशिएटिंग, कल पाकिस्तान की तरफ से दोबारा स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान के अंदर, एंड दे वर इन रिस्पॉन्स टू a suicide attack, gun and suicide attack on Pakistan military installations in the North Waziristan region। और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके हाइड आउट्स के ऊपर स्ट्राइक की अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है दैट दिस सीज फायर इज विद अफगान तालिबान एंड नॉट विद द TTP। सो एनी स्ट्राइक बाय द TTP would be getting a response, a military response from Pakistan,
एंड दिस इज ब्रॉडली अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था अपनी वीडियो के अंदर. दिस इज द पार्ट ऑफ द एंड ऑफ strategic policy of Pakistan, a strategic restraint policy of Pakistan. So Pakistan will no longer be restraining and waiting for Afghan Taliban to act. Pakistan will act on its own if TTP acts against Pakistan, and that's part of the strategy. और इसी तरह का जो मैसेज है वो पाकिस्तान की तरफ से कल ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पब्लिकली दिया है, और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो भी डिफरेंट इंटरेक्शन में ये बात कर चुके हुए हैं दैट पाकिस्तान विल नो लॉन्गर बी अ पैसिव स्टेट. Pakistan would be retaliating to every single act of terrorism that comes from Afghanistan. और उसका एक हिंट जो है वो हमें फील्ड मार्शल की आज होने वाली जो स्पीच है काकुल के अंदर, उसके अंदर भी एक हिंट हमें इसका नजर आता. सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाज़रीन के अब ये टॉक्स जो शुरू हो रही हैं इसमें क्या पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दीज टॉक्स. सबसे पहले जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन होगी नाज़रीन इस हवाले से वो एक्सपेक्टेशन ये है दैट अफगान तालिबान जो है दे वुड डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द टीटीपी एंड दे आर लाइकली टू सपोर्ट पाकिस्तान on the action against the TTP. The least that Afghan Taliban can do is not allow TTP to carry out strikes across the border line inside Pakistan. If they don't act against them, at least they can put brakes on them and they can hold them accountable for if they carry out strikes inside Pakistan. So Pakistan's primary objective is to convince and pressurize Afghan Taliban to put pressure on and rein in the TTP for acting against Pakistan inside Pakistan. Second important expectation that Pakistan might have is that Afghan Taliban might have to and they should share information and intelligence with Pakistan related to potential activities by TTP against Pakistan. So if there is any planning going on, if there is any funding going on, if there is any meeting going on, or an operation is going on from Afghan side by the TTP, we expect Afghan Taliban, if they don't want to act, at least share the intelligence and information with Pakistan so that Pakistan could preempt and prevent such kind of terrorism by TTP across the Durand line. So we expect a kind of more information, a greater intelligence between both states on this issue. लास्ट बट नॉट लीस्ट नाज़रीन पाकिस्तान की एक और जो एक्सपेक्टेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज वी एक्सपेक्ट अफगानिस्तान टू कोलैबोरेट विद पाकिस्तान ऑन द बॉर्डर मैनेजमेंट, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट टू कर्ब द क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिस्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान. नाज़रीन इस हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट अफगान तालिबान जो है वो हिस्टोरिकली डिनाई करते रहे हैं दैट टीटीपी इज नॉट बेस्ड इन अफगानिस्तान, दे डोंट कैरी आउट स्ट्राइक्स फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, समथिंग दैट इज वेरीफाइबली डिनाइड and rejected not just by Pakistan but by the international reports, including the reports by the United Nations, the very United Nations whose permission is required by Afghan Taliban to travel across the world. चाहे वो उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाते हों या वो दोहा में जाते हों, UN permissions are required, और UN permission जब वो मांगते हैं तो they should also accept that UN have given reports in which the TTP is operating from Afghanistan against Pakistan. So because Afghan government denies that, and we understand their diplomatic and political and security reasons for denial of this kind of act, but when they deny it, the best possible thing that they can do is, okay fine, if you want to be believed in, then help us in border management. If you are able to coordinate and cooperate with Pakistan for effective border management, then obviously the TTP will not be able to come to Pakistan, and your cooperation on ground will be a testimony to this fact that you are there on the border and we are there on the border, we are in touch, and we both have not seen the infiltration by these elements. Therefore, we believe that their effective cooperation with Pakistan on border management, cooperation from border posts, the information on the border posts, वो जो information है, वो जो cooperation है border के ऊपर effective border management के लिए, that could be an evidence of and the guarantee of no TTP operating from Afghanistan. And if Afghan Taliban will be right, they will be vindicated by this cooperation. So this is why I believe that Pakistan expects them to cooperate with Pakistan on effective border management, ताकि न सिर्फ टेररिस्ट बल्कि जो एक क्रिमिनल नेक्सस है, चाहे वो स्मगलिंग का हो या ह्यूमन स्मगलिंग का हो या बाकी इलिसिट क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ हों, उसको रोकने में मदद मिलेगी उसमें, और अफगानिस्तान could actually be helpful in this regard. So Pakistan expects Afghanistan to help us in this aspect as well.
और नाज़रीन दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि व्हाट कुड बी अफगान तालिबान एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पाकिस्तान। नाज़रीन उनकी दो मेजर एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। द फर्स्ट बीइंग that Pakistan stops striking inside Afghanistan, and particularly Pakistan stops acting against the Afghan Taliban and their infrastructure, और खासकर जिसमें पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरीके से उसको हिट किया है, अफगान तालिबान वुड वांट पाकिस्तान नॉट टू कैरी आउट स्ट्राइक्स particularly against Afghanistan's political leadership, Afghanistan's military infrastructure, and particularly deep inside Afghanistan. Besides that, the second potential thing that the Afghan Taliban would like to extract is a prolonged marathon talks and negotiations. नाज़रीन अफगान तालिबान चूंकि डिनाई करते हैं टीटीपी को एंड दे आर इन अ पोजीशन वेयर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्ट अगेंस्ट द टीटीपी, therefore they would like that matter could get prolonged and therefore give them more opportunity to have internal discussions on how to deal with this issue. We know that already that Afghan leadership was divided on whether to participate in Doha talks, and at the last moment they allowed Mullah Yaqub to travel to Doha for talks, and therefore इंटरनल जो डिवीजन है अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान में, चाहे वो कंधारीज हों और साथ में जो हक्कानीज हों, या पाकिस्तान के इशू को कैसे डील किया जाए, टीटीपी को कैसे डील किया जाए, उसके लिए अफगान तालिबान वुड लाइक टू हैव मोर टाइम फॉर दैट, एंड देयरफॉर फॉर देम द बेस्ट सिचुएशन वुड बी टू प्रोलॉन्ग एंड स्ट्रेच दोज टॉक्स ताकि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए. But this is something which would be unacceptable to Pakistan. But let's see how Afghan Taliban are able to materialize their expectation from Pakistan on this matter. अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान. Obviously नाज़रीन, considering the past behavior of Afghan Taliban and considering the internal dynamics of Afghan Taliban, what lessons can we learn before we go on to the negotiations with the Afghan Taliban in Doha? Nazarin, one of the major lessons that Pakistan can learn is how Afghan Taliban behaved after the previous Doha deal with the United States administration of that time, Donald Trump's administration, in 2020. Nazin, in that Doha deal in 2020, Afghan Taliban, among other things, they have made a commitment that their soil will not be allowed to be used by any militant group to target United States or its allies in the region. Pakistan, being a non-NATO ally and being a very close partner under Donald Trump administration 2.0, expects the Afghan Taliban to behave accordingly, but we know that they have not. They have been, simply violating that Doha deal by allowing the TTP and other elements to operate from Afghanistan. Therefore, the second lesson that Pakistan need to learn is how can Pakistan ensure that there is verifiable guarantees that Afghan Taliban would follow up to the commitments and potential agreement that they make with Pakistan in this new Doha round of talks, in this new potential agreement between Pakistan and Afghanistan. So without verifiable guarantees, Pakistan should not, and Pakistan is likely not to accept verbal commitment from Afghan Taliban, which they have made in the past, and they have made with the United States as well. नाज़रीन, बट यूनाइटेड स्टेट्स को ये वेरीफाइबल गारंटीज इसलिए नहीं चाहिए थी दैट यूनाइटेड स्टेट्स वाज एग्रीइंग टू विथड्रॉ, बट पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टे हियर. पाकिस्तान विल रिमेन वेयर इट इज. देयरफॉर फॉर परमानेंट सॉल्यूशन, पाकिस्तान वुड रिक्वायर द अफगान तालिबान और द मीडिएटर्स to provide verifiable guarantees of Afghanistan's cooperation in countering TTP hideouts in Afghanistan. Another lesson that Pakistan needs to learn is that अफगानिस्तान तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो मैच करती है टीटीपी के साथ. इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं दैट as long as the ideology of the Taliban exists, there is less likely to be a de-link between the Afghan Taliban and the TTP. But Pakistan needs to learn this lesson that if Afghanistan's Taliban, who are ideologically connected with the TTP more than they are connected with the strategic interest and cultural interest of Pakistan, how can Pakistan make a de-link between them? The historical lesson is that जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो अल-कायदा के साथ लिंक था, Americans were unable to break it diplomatically and they had to resort to force. Lessons that Pakistan need to learn is how can this Taliban 2.0 regime could be disconnected from TTP because they have a history of unbreakable bond with the ideological and ideologues
of the same group. So इस context में Pakistan, if Pakistan thinks that we are unable to completely create a de-link, but at least what we can say is that remain ideologically linked with them, but at what cost? We need to make sure that Afghanistan and Taliban have a cost to this ideological connection that hampers Pakistan's security. And the lesson Pakistan need to learn is that a military approach will remain a very important deterrence because that is going to work. Afghan Taliban, who were unwilling to detach with Al Qaeda in 2001, have publicly accepted in the Doha deal of 2020 that they will not allow Al Qaeda and such like organizations to use Afghan soil, which they have in the past, and the 9/11 was the most important tragedy as an evidence of that. So Pakistan needs to learn that American lesson of delinking Afghan Taliban from Al Qaeda to delinking Afghan Taliban with the TTP. Another lesson that Pakistan needs to learn and be very clear is the strategic clarity about broader interests that Pakistan has with Afghanistan. We know that potentially Afghanistan might be subjected to pressure and might give some concessions to Pakistan on matters related to TTP. But will Afghanistan largely ignore Pakistan's the hostility that they have developed with Pakistan? I don't think so. I personally believe that Khaja Asisa was very right that Pak-Afghan relationship will no longer be the same after this war, however, how much we agree on the TTP issue in Doha talks. The best example in this regard is the greater cooperation between Afghan Taliban and India. So Pakistan needs to understand that these negotiations do not contradict and come into clash with broader strategic interests that Pakistan have, and therefore Pakistan needs to have a very important and relevant strategic clarity on not just the TTP issue, but a broader Pakistan strategic interest in Afghanistan. And therefore, any deal in Doha would not only answer the TTP problem, but broader strategic interest of Pakistan. But to do that, Pakistan needs to be very clear, very transparent, and very objective in understanding and having a strategic clarity of its interest in Afghanistan. सो टू कंक्लूड नाज़रीन हम कह सकते हैं दैट पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है. दिस डील माइट डील विद वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ this broader conflict, but this is less likely to be a solution to broader Pakistan Afghanistan's problem. Therefore, we should not expect much from this deal that could solve the overall problem between Pakistan and Afghanistan. But at the same time, Pakistan must not fall into the trap of infinite talks with Afghan Taliban, and Pakistan needs to clear that there is a limited window of cooperation. Otherwise, the deterrence element is likely to be there, and we must tell them that ideology might be important for Afghan Taliban, but Pakistan's security is important for Pakistan. And therefore, any commitment to Afghan Taliban's ideology having security impact in Pakistan will have a cost for Afghanistan, a cost that they will suffer first at the hands of the United States and now at the hands of Pakistan. Thank you so much, Nazrin, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.